जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है अरहमा सदीका। आप यंग पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। अरहमा, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you so much. अरहमा, आपने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा साउथ एशियन वॉइसेस में कि पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे, वो स्ट्रेंथन अगर होते हैं तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सर्वाइवल एंड रिवाइवल उससे हो सकती है। आपको क्या लगता है कि हमारे ताल्लुकात तो सऊदी अरब से पिछले 75 साल से अच्छे हैं, लेकिन हम क्यों उस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाए? बल्कि आज अगर आप देखें तो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सऊदीज़ एंड अमारातीज़ एंड अमेरिकन जो हैं, दे आर टॉकिंग कि हमने इंडिया को मिडल ईस्ट एंड सऊदी अरब से किस तरह कनेक्ट करना है। एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे 75 साल से अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको क्या लगता है कि हम क्यों ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए, एंड व्हाट ब्रॉट इंडिया इनसाइड दिस, ये जो ब्रैकेट है कि वो अपने ताल्लुकात जो है मैनेज कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे? आप काइंडली हमें ज़रा थोड़ा ब्रीफ करें। Okay, so first of all, thank you for having me on the show. Um, so जो आपका सवाल का जवाब है, so basically, if you compare Pakistan and India, सबसे बड़ा factor ये है कि India has, internally made itself strong. So पहले उन्होंने अपने house को in order put किया है. Situation पाकिस्तान इस तरह की है because there's been a political tug of war. इतना her political party, no political party has been on the same page. There have always been internal differences, and उसकी वजह से because हमारा अपना house इतना divided है, Pakistan could not showcase itself to any of the global economies which are improving and progressing right now. So इंडिया ने अपने आप को आई थिंक 2014 ऑनवर्ड्स मैंने देखा है कि उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया, अंदर से स्ट्रांग किया. सो इवन इंडिया में फॉर एग्जांपल मैं अभी की बात करूँ कि इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत बुरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कवरेज में आप इतना नहीं देखते उसको. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देर ऑल अक्रॉस, देर हेडलाइन न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो देयर इज अ डिफरेंस. पीपल इंडिया में होते हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, एंड देर हॉरिबल प्रोटेस्ट, लेकिन इंडिया में द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज लाइक अच्छा ठीक है, अच्छा फाइन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं. Pakistan, on the other hand, because we have been for so long been so divided, and hopefully soon will be united, we have not been able to showcase itself. That is the first reason. So, because India has showcased itself, अभी आप देख रहे हैं UAE and Saudi Arabia talking about rail links, connectivity with India, because India is seen as a big market, because is उसकी population भी है, it is a big market. India has showcased itself as such. But I would still say, and I would respectfully disagree with you, Pakistan, even despite its challenges, despite the hurdles, जो हम देख रहे हैं, Pakistan, if you compare it to India, Pakistan does have a leverage with in its relationship with Saudi Arabia as compared to India. We have strong religious ties, and that is one reason. We've also a defense pact which goes to 1982, and within that defense pact, we have trainings, military. Some of our military personnel are deployed over there as well in training capacity. Our former chief of army staff is the head of the coalition, Saudi coalition. And also, Pakistan has been blessed uh, geographically, I would say. We have Iran and we have China. With China, for example, we have, I know लोग कहते हैं कि BRI वगैरह प्रोग्रेस नहीं कर रही, ठीक है, it is going at, in Pakistan it is going at a slow pace. But if you see the way China is mapping its route, अब चाइना ने फैसिलिटेट करवा लिया सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती, एंड दैट is good for Pakistan outside, but that makes Pakistan more relevant to Saudi Arabia as well, because our मैडम, neighborhood, yes. मैं थोड़ा इसमें आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने डिफेंस की बात की, हमने जी. यमन में फौजें तो भेजी नहीं थी, एंड द सऊदीज वर वेरी अनॉयड ऑन दैट।
तो हमारा डिफेंस फैक्ट ये है कि जो हम कभी सऊदीज को ट्रेन किया करते थे, आज वो अमेरिकन ट्रेन कर रहे हैं, या और जो आ जाते हैं वो ट्रेन करते हैं। आपने मुसलमानों की बात की, आज इंडियन ज़्यादा जाते हैं हज करने, हमने तो हज का कोटा अपना वापस कर दिया दिस ईयर, बिकॉज वी कुडंट सेंड पीपल, हाजीज को हम भेज ही नहीं सके। देन आप देखिए क्रिकेट के लिए इंडिया, सऊदी अरब ने सारे उनको इंगेज किया, आईपीएल सारी वहां पे पहुंच रही है इंडिया, सऊदी अरब के अंदर जो रियाद में क्रिकेट स्टेडियम बना। तो ये जो लिवरेज है वो एक टर्म है कि वन डजंट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। So don't you believe the Saudis and Indians are becoming customer का relationship है, और हम वही friend खेल रहे हैं। So Chinese देख लें, India and China, they are not friends, they are customers, and the relationship is good। आपको क्या लगता है, ये फ्रेंड वाला रिलेशन ज्यादा अच्छा है कि कस्टमर वाला रिलेशन ज्यादा जो है वो कर रहा है? हम ये फ्रेंड 75 साल से करके, डू यू थिंक वी गॉट समथिंग आउट ऑफ इट? और ये जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर जो ट्रेजेक्टरी बिल्ड हो रही है, जिसमें आईपीएल है, जिसमें सऊदी अरब के आर्मी चीफ का इंडिया में आना है, द क्वेश्चन इज नॉट दैट कि पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब से, बट डोंट यू थिंक द सऊदीज आर, द इंडियंस आर रिप्लेसिंग पाकिस्तान? मेरे को 100% ना भी रिप्लेस करें, लेकिन दे आर मेकिंग देयर इनरोड्स इन मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया एंड अदर प्लेसेस। I would say that India is making its inroads all over the world right now. In Africa, for example, it has made significant inroads. आप IPL वगैरह हज कोटा की पहले बात कर रहे थे, that we had to take back because of our economic situation. It's not because उसका हमारे सऊदी अरब से कोई ताल्लुकात नहीं थे. It was India. Yes, of course, India's economy is stronger than us. Let's face it. Let's not, let's face the facts, their economy is bigger and stronger than ours. And that is why, unfortunately, for the first time in decades, we had to take back our Hajj quota. Aside from that, yes, the thing is that in international relations, and increasingly so, there are no free lunches. There is no such thing as a friend-friend relationship anywhere, in any relationship in the world. So it is always a buyer customer relationship, even with India, Saudi Arabia, Pakistan, Saudi Arabia also. So it's a two-way street for any country. When you see where we have a leverage, the thing is that last year we had the formation of the I2U2. So, as you are aware that there are regional rivalries, regional competitiveness. जैसे हर घर में cousins की होती है आपस में, UAE, Saudi Arabia are vying for regional supremacy, and they are also engaged in outreach to other parts of the world, in which Asia is one of the first priorities for both countries. Now, UAE has made a mark with India. we have the they have a comprehensive economic pact with India, SEPA, and Saudi Arabia does not have that. So Saudi Arabia, obviously, the people in Riyadh, the leadership in Riyadh, they do see that UAE has made significant inroads compared to them in India. So what are they left with? Pakistan. And again, I bring back to the point that Saudi Arabia and Iran की जो दोस्ती हुई है, that plays out well for us as well, because we can now have projects in Gwadar, for example. Aramco facility जो हो ही नहीं रही थी कितने अरसे से, that is now again on the maps. So yes, China was a facilitator in this, but for the good, because now we can have Saudi Arabia, Iran, maybe in the near future, if not in the near future, in the medium to long term, we can have a Saudi, Iran, Pakistani trilateral. That was not possible before. Now it is. And also because India is not at that level engaged with China as much as Iran and Pakistan is. And also, आपने military की बात की. Yes, देखिए, even though I would say that even though China ने दोस्ती करवा ली, China economically inroads कर रहा है वहाँ, but for the medium to long term, like long term, the US will still be dominant militarily in the Middle East for a long time to come. So China cannot replace the US in the Middle East at that point. So we didn't go to Yemen. That was an amazing. That was one of the
correct decisions our government made, and we faced a lot of backlash. But बट ये बताइएगा, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट। ये बताइएगा, आप कहती हैं कि हमारे जो ट्रूप सऊदी अरब में हैं वो एक हमें जो है वो एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, हमारे जो ट्रूप सऊदी अरब में वो क्या कर सकते हैं? वो सऊदी अरब को हमारी तो जो पार्लियामेंट ने लास्ट टाइम बात की थी, उन्होंने कहा था कि व्हेन इट केम टू, जब सऊदीज ने यमन के लिए कहा तो जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि व्हाट्स इन डेंजर, सऊदी अरेबिया, House of Saud, or the holy places. So it was discussed the House of Saud is in danger. It's not the Saudi Arabia. So हमारी फोर्सेस क्या कर सकती हैं वहां पे? आपको क्या लगता है? पर्टिकुलरली ये भी बताइएगा कि ये जो रिसेंटली सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बात की थी कि उन्होंने कहा था ये इजिप्ट और पाकिस्तान के हवाले से कि ये जो हम इतने पैसे देते थे और हम नाउ वी आर गोइंग टू एक्ट लाइक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बात करता है, हम उस तरह इनसे पूछेंगे कि भाई पैसे कहाँ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में, एंड पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह वो चीज़ों को कर रहा है, दे आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ पाकिस्तान अभी, और हमारे लिए मुश्किलात होंगी। फैसिलिटीज़ तो हमने अभी मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास हमारे आर्मी चीफ भी गए, लेकिन उस स्पीड से वो पैसे नहीं निकले, वो चीज़ें नहीं निकली, वो सारा कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि हम वाकई हमारी फ़ौज की सऊदी अरब को ज़रूरत है? जब यमन में उन्होंने चीज़ें ठीक कर ली, ईरान से ठीक कर ली, बाकी खित्ते में चीज़ें उन्होंने ठीक कर ली, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? So, per se, I would say because of the global financial crunch all over the world, and because Pakistan ने यू टर्न मारा था 2019 में IMF जो डील हुई थी, so the trust factor with all the IMF, with Saudi Arabia, with all the lender countries, that did go down. ठीक है? But I would say with the new government जो आई अभी, relatively new government जो अप्रैल में आई है, because it has familial connections with the Saudi leadership and the UAE leadership, तो एक चांस था हमारे पास कि अच्छा ठीक है, to gain the trust factor back. आपने जो कहा कि स्टेटमेंट जो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने की है, इट्स एंड जो उसने कहा कि हम इंटरेस्ट के बगैर नहीं, हम इंटरेस्ट भी लेंगे, उसने कहा है देयर बी स्ट्रिंग्स अटैच्ड. That's only because there, after COVID, there is a financial fiscal. COVID ने economy दुनिया की तबाह कर दी. And these countries, they all have, Middle East countries, they all have their visions to rejuvenate their economies. I would say again, अगर यमन वाला decision was correct, because and even the Qatar वाला decision in 2017 was correct, because had for example अगर हम लोग पढ़ जाते उस जंग में, तो आज हम लोग मतलब we would have been in no position. तो we made the absolute correct decision उस वक्त, and in Qatar 2017 जो गल्फ क्राइसिस था. पैसे इसलिए हमें मिलेंगे, वो मिल रहे हैं, वो I think, ठीक है. So how do I explain? So Saudi Arabia would always want an ally like Pakistan next to it, which will always be there to support it no matter what. Because, let's face it, we do owe Saudi Arabia a lot. In 98, when we had the nuclear test, it was Saudi Arabia which provided us oil facilities, right, on deferred payments. And Saudi Arabia is the one country that has time and again come to Pakistan's aid. उसके बाद मैं कहूँगी China, फिर मैं कहूँगी Saudi Arabia. When it comes to the army, the Saudi leadership, it goes without saying, they trust the army, Pakistani army, more than the leadership at the moment, because the leadership, not just, I'm talking about all the political parties in Pakistan, because there has been so much political turmoil at, because Saudi leadership feels that the only stable entity right now is the army. So इसलिए they prefer to deal with the army directly. But again, I would say that Saudi Arabia needs Pakistan as an ally. Which country would not want Pakistan as an ally? And जो हमारे troops हैं उधर, yes, again 1982 में, if the holy places were in danger, Pakistan would have gone. Pakistan has historically also defended them, but because this was something, because geographically
we're tired. We have Iran on our border. We can't change our neighbors. And honestly, I would say it was one of the best decisions the government has made, because honestly, had we even thoda sa uh, tilted towards yes, had we sent troops in the capacity of the Saudi coalition, the backlash would have been much, much severe in 2023. और हम जरा मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान की यूथ है, सुनने में आ रहा है कि जो नेचर ऑफ जॉब्स मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में है, वो तब्दील हो रही हैं। आपको लग रहा है द वे पाकिस्तानी यूथ इज इक्विप्ड, जिस तरह का इनकी कैपेसिटी है या जिस तरह ये काम इनकी टीचिंग्स हैं, ज़्यादा हम आपको पता है हमारा 60% जो लिटरेसी रेट है वो भी कागज़ों में है मेरा ख्याल है। बड़े कम लोग हैं जो टेक्निकली लिटरेट हैं, पर्टिकुलरली इन टेक्निकल टर्म्स, और जो आजकल जिस तरह का ज़माना है कि हमें टेक्निकल चीज़ों में जो है वो ज़्यादा आगे आना पड़ता है। आपको लगता है कि हमारी यूथ जो है वो ज़्यादा इंगेज कर पा सकती है या वहाँ पे जॉब्स ले सकती है? हम मेरा ख्याल है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-7 अरब डॉलर तो पाकिस्तान फॉरेन रेमिटेंस की सऊदी अरब से आती है सालाना। तो आगे इसको आप हाउ डू यू सी दिस, ये जो है कि हमारी यूथ का क्या फ्यूचर है सऊदी अरब में, एंड पर्टिकुलरली ये जो अभी सिचुएशन है कि जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ जॉब्स टेक्निकल हैं, उनको वो लेबर नहीं चाहिए जो हम माजी में वहाँ भेजते रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? So our overseas Pakistani Foundation is उन्होंने 2022 and 2021 में MOU sign किए हैं with their Saudi counterpart and training programs, Saudi और पाकिस्तानी joint training programs देते हैं workers को who want to avail opportunities in the Middle East, particularly Saudi Arabia. Now with Saudi Arabia, because MBS has to successfully implement his Vision 2030, because obviously इज्जत का सवाल होता है. He has to implement it properly. He has different projects. For example, Neon City project हो गया, 2-3 और भी हैं. He needs a lot of technical support, which the Saudi youth don't really, मतलब उन्होंने अपने आप को उस तरफ engage नहीं किया. Now Pakistan 60% of the population is youth, almost 70 now. So what Pakistan can do, what the government is doing already, but it needs to increase the pace, is to give vocational training to people who are interested in applying to the Middle East countries. So they are doing it, but they need to accelerate the pace. That's all. In construction, in education, construction, health, and technical IT, I would say. These are the 4 areas where Pakistani youth have an advantage comparatively, and they are actually preferred that they come work in the Middle East countries. So they have openings there. So our government needs to accelerate the process. They are, but they need to be quick about it. बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी कि ये कैसे चीज़ें फ्यूचर में अनफोल्ड होती हैं, बिकॉज सऊदीज़ की डिमांड चेंज हो रही हैं, और हमें भी ज़ाहिर बात है अपने यूथ को, बच्चों को उस हिसाब से फ्यूचर में इक्विप करना है। बिकॉज देखने में तो यही आ रहा है, मिडल ईस्ट में इंडिया की ज़्यादा इंक्रेस बढ़ती जा रही है, एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने अपने ख़ास तौर पे फोकस किया हुआ है कि अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर किस तरह पेनिट्रेट करना है, एंड ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। अभी ये देखें ना, I2U2, एंड देयर सो मच दे आर डूइंग टू, इवन बायलैटरली GCC एंड इंडिया टॉकिंग ऑफ हैविंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. The Emiratis and Saudis are having 100 billion trade by 2030. So I think they are looking India in a different way. हम जाके हाथ कर लेते हैं. Okay, so it won't work for long. And मुझे लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर वाला ज़्यादा reliable and long term होगा in coming years, rather than brotherly friendly. It may not work. Anyhow, let's see. You have your own perspective on this. Thank you very much for sharing your opinion with us, and आपने जो article लिखा, that was very interesting. Thank you very much, Arhama, for your time. Okay, thank you.